Assalamu alaikum students and welcome back. I hope you all are doing great. The topic that we are going to understand and cover in this lecture, in this video is direct and inverse proportion. Now, let me first confuse you with the one-liner statements about directly proportional quantities and inversely proportional quantities. So, whenever we have two mathematical variable quantities, and they both increase proportionally or decrease proportionally, maintaining a constant ratio, we call these quantities, they are directly proportional to each other. And if the two mathematical variable quantities move in the opposite direction, if one increases, the other decreases proportionally, and vice versa, maintaining a constant product, we call them that the quantities are inversely proportional to each other. Confused? Now, confusion का main cause यहाँ पर ये है कि we have to first understand the basic concepts related to this topic. What are mathematical variables? How are variables linked with each other? Direct relation क्या है? Inverse relation क्या है? Number 3, what is the concept of proportionality? Proportionality का यहाँ पे क्या meaning है? And last, what are dependent variables and what are independent variables? जब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हम बहुत इजीली अपनी इन डेफिनेशंस को इजीली फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. Okay students, now let's talk about the basic concept, starting with what are variable mathematical quantities. Suppose in this example there is a city A and a city B. A driver wants to cover this distance, that is 200 kilometers. Distance between two cities is 200 kilometers. So the driver who's driving the car drives the car at a constant speed. अब ये assume करते हैं कि constant speed पे वो drive कर रहा है. It takes about 2 hours 120 minutes to cover this distance, and the fuel required for this entire journey is 20 liters. Three mathematical quantities discussed ki: distance between two cities, time required, and fuel required. All these three mathematical quantities are fixed mathematical quantities. लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज को हम चेंज नहीं कर सकते ना. अगर ड्राइवर एक कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव कर रहा है तो जो टाइम लगना है वो लगना है उस डिस्टेंस को कवर होने में, एंड जो फ्यूल गाड़ी ने कंज्यूम करना है तो वो कंज्यूम होगा, राइट? सो दीज आर द थ्री फिक्स्ड मैथमेटिकल क्वांटिटीज. बट in this example there are multiple variable mathematical quantities as well. Suppose a car that starts from 0 kilometer and reaches 50 kilometers. तो भाई कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस रिमेनिंग कुछ है, 50 किलोमीटर्स कवर है, 150 kilometers remaining है. When it reaches 100 kilometers, distance covered is 100 kilometers, distance remaining is also 100 kilometers. जब वह 150 kilometers पे पहुंचता है, distance covered is 150 kilometers and distance remaining is 50 kilometers. Constantly change होता जा रहा है. So दो mathematical variable quantities जो यहाँ पर हमारे सामने आई वो है distance covered जो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, एंड डिस्टेंस रिमेनिंग अगेन जैसे जैसे कार ट्रेवल करती जा रही है डिस्टेंस रिमेनिंग कम होता जा रहा है, इज अगेन अ वेरिएबल क्वांटिटी. लेट्स राइट देम डाउन हियर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड एंड डिस्टेंस रिमेनिंग. लेट्स टॉक अबाउट टाइम. देखिए 30 मिनट्स की जब जर्नी कंप्लीट हो गई है, रिमेनिंग इज 90 मिनट्स की जर्नी. जब 60 मिनट्स की जर्नी कंप्लीट हो जाती है, 60 मिनट्स की जर्नी रिमेनिंग है. जब 90 मिनट्स की जर्नी कंप्लीट हो जाती है, देन 30 मिनट्स की जर्नी रिमेनिंग है. वंस अगेन वी हैव टू वेरिएबल मैथमेटिकल क्वांटिटीज हियर, टाइम टेकन एंड टाइम रिमेनिंग. Time taken to cover 50 kilometers is 30 minutes. Time remaining is 90 minutes. Time taken to cover 100 kilometers is 60 minutes. Time remaining is 60 minutes. Time taken to cover 150 kilometers is 90 minutes. Time remaining is 30 minutes. So, time taken
and time remaining are two variable mathematical quantities. Now, let's talk about fuel. At the starting of the journey, the fuel in the tank is 20 liters. After 50 kilometers, fuel consumed is 5 liters, fuel remaining is 15 liters. After 100 kilometers, fuel consumed is 10 liters and fuel remaining is 10 liters. After 150 kilometers, fuel consumed is 15 liters and remaining is 5 liters. Once again, fuel consumed and fuel remaining in the tank are also variable mathematical quantities. They are also varying. So, fuel consumed and fuel remaining. In this example, there are 3 fixed quantities and 6 variable mathematical quantities. Variable mathematical quantities are those quantities that keep changing. Okay, I hope this is clear to you. Okay, students, so the next important concept is how are two variable quantities linked with each other. Now, assume that in a particular scenario, if there are two variable quantities and changing one affects the other, which means कि अगर एक को change किया जाए तो दूसरा भी change हो जाता है, automatically we call them that the quantities are related to each other. Now, there are two types of relationship. Number one, direct, and number two, inverse relation. Direct relation या फिर inverse relation. Now, what is meant by direct relation and what is meant by inverse relation? सबसे पहले direct relation को समझें. Suppose in this case, distance traveled and time taken. These are two variable quantities. Let's say distance traveled and time taken. So 50 kilometers पे time taken is 30 minutes. 100 kilometers पे the time taken is 60 minutes and 150 kilometers पे time taken is 90 minutes. See, change in distance traveled is changing time taken. और कैसे चेंज कर रहा है यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है. सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंक्रीजिंग, टाइम टेकन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. If one quantity is increasing and the other quantity is also increasing, we call it that the two quantities are directly related to each other. ठीक है, they are directly related to each other. Let's take another example. Distance traveled and fuel consumed. So suppose 50 kilometers पे fuel consumed is 5 liters, 100 kilometers पे fuel consumed is 10 liters and 150 kilometers पे fuel consumed is 15 liters. Change in one is changing the other. And how is it changing? Increase in distance traveled is increasing fuel consumption. So the two mathematical variable quantities, distance traveled and fuel consumed, are directly related to each other because increase in one is increasing the other. Right? Now, let's take another example. This time, we are going to take distance remaining and fuel remaining. So 50 kilometers पे distance remaining कितना आ गया 150 kilometers. Once the car travels 50 kilometers, अब distance remaining कितना है 150 kilometers. Fuel remaining in tank कितना है 15 liters. After 100 kilometers, remaining distance is 100 kilometers. Fuel remaining in the tank is 10 liters.
After 150 kilometers, the distance remaining is 50 kilometers, and fuel remaining in the tank is 5 liters. जब 150 किलोमीटर रिमेनिंग है तो फ्यूल रिमेनिंग इज 15 लीटर्स. जब 100 किलोमीटर रिमेनिंग है तो 10 लीटर्स. एंड जब 150 किलोमीटर जब 50 किलोमीटर रिमेनिंग है देन 5 liters are present in the tank. Now, how are these two quantities related? See, decreasing one is decreasing the other. Decrease in one quantity is decreasing the other quantity. Again, we call them that they are directly related to each other. So, whenever there are two variable quantities, change in one affects the other, which means changing one quantity is changing the other quantity in a way that if one increases, the other increases, or if one decreases, the other also decreases. In दोनों ही scenarios को हम कहते हैं that the quantities are directly related to each other. I hope directly related quantities के बारे में अब आपको clear हो चुका होगा. Now let's talk about what are inversely related quantities. So in this case, what we are going to do is we'll take distance traveled and fuel remaining. So if the distance traveled is 50 kilometers, the fuel remaining is 15 liters. If the distance traveled is 100 kilometers, fuel remaining is 10 liters. And if the distance traveled is 150 kilometers, fuel remaining is 5 liters. Now, change in one is affecting the other. But how is it affecting? As the distance traveled is increasing, fuel remaining in the tank is decreasing. We call this inversely related quantities. The two quantities, distance traveled and fuel remaining, are inversely related to each other because one is increasing, the other is decreasing. So, and vice versa, if one is decreasing and the other is increasing, let's say distance travel को मैं इधर से हटा के इधर कर देता हूं. Decrease in one is increasing the other. From 15 to 5 liters, 50 to 150 kilometers. Decrease in one is increasing the other. Once again, we call this inversely related. The two quantities are inversely related to each other. So, whenever there are two variable mathematical quantities and they are linked in a way that change in one, which is increasing one, increases the other, or decreasing one quantity decreases the other quantity, we call them that they are directly related to each other. But if increase in one makes the other decrease, increase in one decreases the other quantity, or decrease in one quantity increases the other quantity, they move in the opposite directions, we call them that they are inversely related to each other. I hope directly related and inversely related का concept आपको clear हो चुका होगा. Okay students, so the next very important concept is dependent and independent variable. देखिए, whenever there are two variables और एक को change करने से दूसरा change हो रहा है, so one has to be independent and one has to be dependent. अब इस बात का क्या मतलब है? Suppose number of markers and cost of markers. Suppose I buy one marker and I have to pay 50 rupees. So दो variables कौन से हो गए? Number of markers and cost. If I buy two markers, I have to pay 100 rupees. If I buy three markers, I have to pay 150 rupees and so on. So number of markers मैं खुद vary कर सकता हूँ. It is my choice. I can go and buy one marker, two markers, three markers, 10 markers and so on. It is my choice, right? So number of markers मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना. दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये मैं खुद चेंज कर सकता हूं. बट अगर मैं वन मार्कर परचेज करता हूं तो आई हैव टू पे 50 रुपीज. इफ आई बाय टू मार्कर्स आई हैव टू पे 100 रुपीज.
नंबर ऑफ मार्कर्स तो मेरी चॉइस है, बट कॉस्ट तो मेरे ऊपर नहीं है ना, कॉस्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्कर्स पे। सो वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर रिलाई करे, वी कॉल इट डिपेंडेंट क्वांटिटी। कॉस्ट डिपेंड करती है, रिलाई कर रही है नंबर ऑफ मार्कर्स पे, सो कॉस्ट इज डिपेंडेंट एंड number of markers is independent variable, right? In this case, for example, distance traveled and fuel consumed. भाई ड्राइवर की चॉइस है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर ड्राइवर 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो फ्यूल कंज्यूम इज 5 लीटर्स। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो फ्यूल कंज्यूम्ड इज 10 लीटर्स। अगर वो 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो फ्यूल कंज्यूम्ड इज 15 लीटर्स, राइट? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ड्राइवर की अपनी चॉइस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अकॉर्डिंगली फ्यूल भी उतना ही कंज्यूम होगा। फ्यूल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। सो फ्यूल कंज्यूम्ड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको अब क्लियर हो चुका होगा। Okay, students, so the last and perhaps the most important concept is the concept of proportionality. What is meant by proportionality? Okay, in layman terms, we can say it is predictability. Now, what does that mean? चलें इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो हम चेंज करते हैं और उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एक रियल लाइफ में सिटी ए से सिटी बी जा रहे हैं, राइट? और आपको वही डिस्टेंस कवर करना है। सो द फर्स्ट 50 किलोमीटर टुक 30 मिनट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकिंग। सो द फर्स्ट 50 किलोमीटर टुक 30 मिनट्स टू कवर। अब बताएं, क्या ये नेसेसरी है कि नेक्स्ट 50 किलोमीटर भी आप 30 मिनट्स में ही रियल लाइफ में कवर करेंगे? इन रियल लाइफ सिनेरियो it can take 20 minutes, it can take 25 minutes, right? So let's say 100 kilometers कवर करने में आपको टाइम लग गया 50 minutes, which means आपने next 50 kilometers 20 minutes में कवर किया है, and the next 50 kilometers, that is 150 kilometers in total, आपने 75 minutes में, which means 25 minutes में कवर किया है। Change in one is changing the other. Increase in this distance traveled is increasing time taken. Time taken and the distance traveled in this case are directly related to each other, right? They are, because change is in increasing one is increasing the other, so they are directly related to each other, but they are not directly proportional to each other. Concept of proportionality is predictability. सो अगर आपके फर्स्ट 50 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर हुए हैं, नेक्स्ट 50 किलोमीटर भी 30 मिनट्स में ही कवर होना चाहिए है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर भी आपका 30 मिनट्स में ही ट्रेवल होना चाहिए, कवर होना चाहिए। दैट इज 60 मिनट्स एंड दैट इज 90 मिनट्स। नेक्स्ट 50 किलोमीटर आपका अगेन 30 मिनट्स में ही कवर होना चाहिए है। सो change in one is changing the other. Increase in one quantity is increasing the other quantity, but because of predictability, we call it that these quantities are directly proportional to each other. यहाँ पर एक proportionality है, right? एक predictability है। Now, ये बहुत layman terms में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जो actual concept of proportionality है ना, जो actual calculation of proportionality है, वो हमारे next part में हम cover करेंगे। For now, just understand, अगर किसी भी सिनेरियो में टू क्वांटिटीज हैं that are directly related or inversely related and they have a constant of proportionality, वहां पे proportionality है, एक predictability है, we call them directly proportional to each other, inversely proportional to each other. So change in one is changing the other, but proportionally, random नहीं है, एक proportionality है, right? Now, let's say for inverse proportion, let me give you another example. Suppose हमारे पास एक वाटर टैंक है
and we open a tap to fill that water tank. अगर मैं एक टैप को ओपन करूं, just one tap, if I open one tap, it will take, let's say, 30 minutes to fill that water tank, right? So one tap fills the water tank in 30 minutes. What about two taps? How much time will it take for two taps to fill the same water tank? Automatically आपका माइंड कहता है 15 minutes, because दोनों में टाइम डिवाइड हो गया. Predictability, right? So we call this कि भाई number of taps increase हो गए, time decrease हो गया. They are inversely proportional to each other. But अब assume करें, अगर मैं आपसे कहता है कि जी एक टैप, वन टैप पे 30 मिनट्स एंड टू टैप्स पे 20 मिनट्स, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है. मे बी एक टैप का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा है एंड एक टैप का फ्लो थोड़ा कम है, इस वजह से 20 मिनट्स लगे. अदरवाइज हमारा माइंड क्या कहता है कि यार अगर टू टैप्स ओपन किए हैं तो 15 मिनट्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा. लेट्स से 30 मिनट्स, टू टैप्स पे 20 मिनट्स, थ्री टैप्स पे लेट्स से 15 मिनट्स. सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए. इन सिनेरियो जहां 30 मिनट्स, 20 मिनट्स और 15 मिनट्स लग रहे हैं, वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है. क्वांटिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम टेकन डिक्रीज हो रहा है, बट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है. वेयर एज अगर हम कहें वन टैप विल टेक 30 मिनट्स, टू टैप्स विल टेक 15 मिनट्स, दोनों में टाइम डिवाइड हो गया. थ्री टैप्स विल टेक 10 मिनट्स, तीनों में टाइम डिवाइड हो गया. यहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है. आई होप प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. सो डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हो सकती हैं इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इनवर्सली रिलेटेड क्वांटिटीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हो सकती हैं इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देयर. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, डायरेक्टली रिलेटेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कंफ्यूजन ना कीजिएगा. There can be a lot of quantities that are directly related or inversely related, but they are not directly proportional or inversely proportional. So for proportionality, directly proportional and inversely proportional, there is supposed to be a constant of proportionality. Now what is that constant of proportionality? उसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ लेमैन टर्म्स में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को समझने की कोशिश की है. वी हैव जस्ट ट्राइड आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी नॉट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, concept of proportionality in very layman terms. I hope concept of proportionality is now clear to you. So now as we have understood all the concepts related to direct and inverse proportion, let's get back to the basic definition and mathematical formulas of direct and inverse proportion. Starting with direct proportion, हमने study किया था. In the starting, whenever we have two variables and we take their ratio, every time the ratio will be same, which means they will maintain a constant ratio. Under every condition, if one quantity doubles, the other will double. If one quantity triples, the other will also triple. Their ratio will always be a constant, the same value. Now, let's take this. Let's take an example and understand this thing. Suppose we have number of markers and cost of those markers. These are the two variables. Obviously, number of markers is an independent quantity and cost is a dependent quantity. So we'll say number of markers x, cost is y. What we will get is, let's say the first condition is, if I buy one marker, it will cost 80 rupees. If I buy two markers, it will cost 160 rupees. If I buy three markers, the cost will be 240 rupees. They will maintain a constant ratio. What does that mean? देखें, 80 upon 1, y1 upon x1 and 160 upon 2, y2 upon x2 and 240 upon 3. y3 upon x3, they will maintain a constant ratio. 80 upon 1 is
80. 160 upon 2 is again 80. 240 upon 3 is again 80, which means they are all same and they maintain a constant ratio. This value is called constant of proportionality. This will give us our first formula of direct proportion, and that is y1 upon x1, y की first value and x की first value is equals to y2 upon x2, y की second value and x की second value is equals to y3 upon x3. So we can say the first formula is y1 upon x1 is equals to y2 upon x2 is equals to y3 upon x3, and so on, y4 upon x4, y5 upon x5, they are all equal. So this is our first formula. We can take any two iterations. Y1 upon x1 is equals to y2 upon x2. We can take y1 upon x1 is equals to y3 upon x3, and so on. हम कोई भी दो iterations लेंगे, we can say that they are equal because वो constant ratio maintain करते हैं, उसका answer एक ही है, and that answer is constant of proportionality. This is the first formula. Now, the second formula. Whenever we are going to take the ratio of y upon x, y and x, what do we get? Y upon x, we will get a constant. Let's say that constant is k. We call this k constant of proportionality. देखें, जब भी मैं y को y upon x करूंगा, I'll get a value, ना, constant value, that is k. Y upon x is equals to k. So this is our second formula. We can rearrange this and we can say, let's take x on the other side. Y is equals to k times x. This is the second formula that we get. Y is always equals to constant of proportionality times x. How? If let's say the value of k in this case is 80. So whenever I take y is equals to 80 into x, 80 multiplied by 1 is 80. So if I buy one pen, the cost will be 80 rupees. 80 into 1 is 80. If I buy two pens, 80 into 2 is 160. If I buy three pens, 80 into 3 is 240. So this is the second formula. So these are the two mathematical formulas for direct proportion. I hope आप इन formulas को अब understand कर चुके होंगे. Now let's talk about inverse proportion. According to the definition, whenever we have two mathematical variables and they maintain a constant product, we call them inversely proportional quantities. So what does that mean? And how are we going to get the first formula of inverse proportion? Let's take a simple example to understand this. Suppose I have a water tank, मुझे उसको fill करना है, and I have a number of taps, 2, 3, 4, 5, a number of taps are present over there. So I will open one tap and let's say it takes 60 minutes to fill that water tank. If I open two taps, it will take 30 minutes to fill that water tank. Now, what we are going to do is we are going to see what are the two mathematical variables here. The first is number of taps and the second is time taken to fill the tank. So, number of taps and time taken to fill the water tank. Number of taps obviously is an independent quantity. It is up to us. We can open one tap, we can open two taps. It is up to us. But the time taken depends on the number of taps. So let's say if one tap will fill a water tank in 60 minutes, two taps will fill the water tank in 30 minutes, and three taps will fill the water tank in 20 minutes, and four taps will fill the water tank in 15 minutes. Now, according to the definition, they must always maintain a constant product. So let's see, y1 and x1,
the first value of y multiplied with the first value of x. The second value of y multiplied with the second value of x. The third value of y multiplied with the third value of x. Fourth value of y multiplied with the fourth value of x. Let's see, 60 times 1 is 60. 30 times 2 is again 60. 20 3 times is again 60, and 15 4 times is also 60, which means they are all equals to each other. They are all equals to each other. They are maintaining a constant product. Product means multiplication between two quantities, two variables. So we can say that y1 x1, y की first value and x की first value, is equals to y2 x2, y की second value and x की second value. The formula we get is y1 x1 is equals to y2 x2, that is equals to y3 x3 equals to y4 x4, and so on. This is called maintaining a constant product, and using this we can get the first formula, that is y1 x1 is equals to y2 x2 is equals to y3 x2, because every time this is equals to this, this is equals to this, and so on. They will always be equal. That is why they are called inversely proportional to each other. They are maintaining a constant product. Now another formula is y into x is equals to k, because this value is a constant of proportionality. We call this constant of proportionality, right? So every time I multiply y with x, we will get a constant k. So we will say y multiplied with x every time will give us a constant of proportionality or constant k. We can rearrange this formula and we can say that y is always equals to k upon x. This is the second formula we get for inverse proportion. I hope it is now clear to you. Now, if you understand the formulas of direct and inverse proportion, I have written down the formulas here. Let's practice these formulas and let's see how we can use these formulas to solve numericals and word problems and application. Now, we'll start with direct proportion. Let's see. In this case, if y is directly proportional to x, y is directly proportional to x, y is proportional to x, because it is directly proportional to x, we are going to use these two formulas. Depending upon the question that is asked, which formula we are supposed to use, let's see. Y is equals to 30 when x is equals to 5. Y is equals to 30 when x is equals to 5. Find the value of y when x is equals to 15. Now, in this case, क्वेश्चन में हमसे कहीं पर भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मालूम नहीं किया गया. कहीं उसने नहीं कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें कहीं भी नहीं कहा. सो हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला y1 upon x1 is equals to y2 upon x2. Suppose y1 is equals to 30, x1 is equals to 5. Now y2 is equals to what when x2 is equals to 15. So we are going to use the formula y1 upon x1 is equals to y2 upon x2, and we are going to substitute the values that are given to us. 30 upon 5 is equals to y2, which we are supposed to find out, upon 15. Now we'll take 15 on the other side. This will become 30 multiplied with 15 upon 5 is equals to y2. Now 5 ones are 5, 5 3 times is 15, 30 into 3 is 90 is equals to y2. The value of y2 is 90. See, because this is directly proportional, if the value
of x is 5, value of y is 30. So if x is 3 times actual value, 5 multiplied by 3 is 15, right? So y should also be 3 times. 30 into 3 is 90. Now, using this formula, y1 upon x1 is equal to y2 upon x2, we can easily calculate any missing value. If it is y1, if it is x1, whether y2 or x2, any missing value we can find out using this formula. What we need is the 3 remaining values. If we have any 3 remaining value, we can find out the missing value simply by using this formula. I hope it is clear to you. Now, let's see another question. If x is directly proportional to y, if x is directly proportional to y, in the previous question, the question stated if y is directly proportional to x. So, what we did was, we said that y is proportional to x because it is directly proportional to x. So, sign of proportionality is replaced by is equals to kx, because y is directly proportional to x. This sign is represents proportionality, whether direct or inverse, but proportionality. Now, whenever it is a directly proportional, the sign symbol is replaced by equals to k. So, y is equals to kx. Y is directly proportional to x, which makes y a dependent quantity and x an independent quantity. Any change in x will automatically change y, right? Now, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि इफ द फॉर्मूला सेज y इज इक्वल टू के एक्स, इसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। नहीं, ये हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए टर्म्स y और x सेलेक्ट किए हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे y और x ही होगा, राइट? नाउ सपोज करें वो कहता है आपसे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, ना तो y कह रहा है ना तो x कह रहा है। What is a and what is b, right? Which quantity is independent and which quantity is dependent? आप कैसे बताओगे अगर आपको सिर्फ x और y ही माइंड में है सिर्फ? So remember this thing always, x and y ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x हमेशा इंडिपेंडेंट और y हमेशा डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशंस को देखते हुए, क्वेश्चन के नोमेनक्लेचर को देखते हुए हम इनकी वैल्यूज को, इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, इनकी जगह कोई और अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, whether it is a, b, c, p, q, r, whatever it is a dependent quantity, and the quantity on the right hand side with k that multiplies with k is an independent quantity, right? So every question will be different. ये फॉर्मूला सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला है, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. So in this case, if x is directly proportional to y, which means x is proportional to y, and how is it proportional? X is equals to ky. Now this equals to ky shows that it is directly proportional. If k upon y ho jata, it would have shown us inversely proportional, but because it is directly proportional, so x is equals to ky. Now, and x is equals to 4.5 when y is equals to 3. The value of x is 4.5 when y is equals to 3. Find an equation connecting x and y. We have to find out the equation. अब equation क्या है? ये है equation. Now, we know in this equation there is an x जो कि एक variable है, there is a y, again it's a variable, but k तो एक constant है ना, तो constant की value क्या है वो हमें find out करनी होगी, तो ही हमें हमारी final equation मिलेगी. Now, what we are going to do is we are going to substitute the values that are given to us in this equation. Let's say x is equals to 4.5 is equals to k, y is 3.
value substituted 4.5 upon 3 is equals to k, which is 1.5 is equals to k. 4.5 divided by 3 is 1.5. So now we have the value of k. K is equals to 1.5. So we can say, therefore, the formula x is equals to ky, x is equals to ky can now be called x is equals to 1.5 times y. The value of k is 1.5. So now we have the formula x is equals to 1.5 y. What we are going to do is, सबसे पहले तो हमने अपनी इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है, उसको जिस तरह से चेंज करना है, जिस तरह y की जगह यहाँ x था, x की जगह यहाँ पे y था, हमने वो वैल्यूज, वो इक्वेशन क्रिएट कर दी. राइट नाउ उस इक्वेशन में x और y तो हर वक्त चेंज होते रहेंगे बिकॉज दे आर वेरिएबल्स, बट k इज अ कांस्टेंट. सो व्हेनेवर इट सेज एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, तो वो ये इक्वेशन है. बट इस इक्वेशन में k इज अ कांस्टेंट, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. और वो कैसे होगी? एक आइट्रेशन उसने हमें दी हुई होगी, x की और y की वैल्यू उसने बताई हुई होगी कि भाई ये वैल्यूज हैं, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें. Once you have the value of k, now after getting the value of k, go back to this equation and now instead of k, substitute the value and say x is equals to 1.5y. k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें and you have the final equation. I hope this part 1 is now clear to you. अब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इक्वेशन कनेक्टिंग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ in part 2, this was part 1, the value of x when y is equals to 6. Value of x, x की क्या value होगी when y is equals to 6? Now we have two formulas here. y1 upon x1 is equals to y2 upon x2 and y is equals to kx, right? हमने इसको change कर दिया है and we have the equation x is equals to 1.5y. We don't have to use this formula because now we have the equation. अगर उसने हमसे ऑलरेडी एक दफा इक्वेशन फाइंड आउट करवा ली है, अब हमें उस फॉर्मूला की तरफ जाना ही नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू यूज दिस इक्वेशन, जो कि अब हमारी है x इज इक्वल टू 1.5y. द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6. x की क्या वैल्यू होगी व्हेन y की वैल्यू है 6? ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 9. सी easily you can find out the missing value जब आपके पास एक दफा इक्वेशन आ जाए. Now in part 3 what it says is the value of y when x is equals to 12. y की क्या वैल्यू है when x is equals to 12? Now equation x is equals to 1.5y. This is our equation connecting x and y. Now what we have to do is simply substitute the value of x in this equation. x की जगह क्या लिख देंगे? 12 is equals to 1.5y. Now y is the missing variable. 1.5 लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं. 12 divided by 1.5 is equals to y, because y के साथ 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है. On the other side ये डिवाइड होगा. So 12 divided by 1.5 is 8 is equals to y. So the value of y is 8 when x is equals to 12. Now remember this thing, whenever we have a first part that says an equation connecting x and y or equation connecting two variables that are given, जो भी दो variables हो, a हो, b हो, c d हो, p q हो, whatever it is, what we have to do is we have to find an equation connecting those two variables. Once we have that equation, उसको use करके missing variables find out किए जा सकते हैं. एक variable given है, उसको substitute करें, जो वेरिएबल गिवन नहीं है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा. आई होप द क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. इफ q is directly proportional to p, q is proportional to p, how is it proportional? q is equals to kp. Now because it is directly proportional, that is why equals to kpi, right? अब यहां पर अभी से डिसाइड कर लें, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज y इज इक्वल्स टू kx, व्हिच मींस y एंड x, द टू वेरिएबल्स, उन टू वेरिएबल्स के लिए इस
एक क्वेश्चन के अंदर कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? y इस केस में एक्चुअली इज q एंड x जो कि यहां है इस केस में इज p. सो q रिप्लेसेस y एंड p रिप्लेसेस x. नाउ अब जहां भी हम कोई भी फॉर्मूला इन दोनों में से यूज करेंगे, wherever we have y we will say q and wherever we have x we will say p. Now if q is directly proportional to p and q is equals to 3 when p is equals to 18, q की first value is 3 and p की first value is 18. Find the value of q. q की second value क्या होगी when p is equals to 24? When p is equals to 24. Now again कहीं पे equation find out करने के लिए नहीं कहा, कहीं पे constant of proportionality k की value find out करने के लिए नहीं कहा. So we are going to use this formula, that is y1 upon x1. Now y की जगह क्या था? q1 upon x की जगह क्या था? p1 is equals to q2 upon p2. Now let's replace the values, let's substitute the values. q1 is equals to 3 upon p1 is 18 is equals to q2 upon p is 24. q3 upon 18, 3 upon 18 is equals to q2 upon 24. ठीक है, जहां जहां y था वहां हमने q रख लिया और जहां जहां x था वहां हमने p रख लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q2. तो हमें 24 को इक्वल्स टू की दूसरे हैंड पे मूव करना पड़ेगा. 3 मल्टीप्लाइड विद 24 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू q2. नाउ 3 6 times is 18. 6 1 times is 6 6 4 is 24. Now 4 is equals to q2. So when q is equals to 3, p is equals to 18. But when p is equals to 24, अब q की वैल्यू इज 4. देखिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो जब 18 से 24 हो गई वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो q की वैल्यू भी इंक्रीज ही होनी थी. 3 से 4 हो गई. आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू. Now let's look at another example. If b is directly proportional to a, b is directly proportional to a, which means b is proportional to a and b is equals to k times a, because it is directly proportional, so equals to k. Now again in this equation y is now replaced by b and x is replaced by a. So अब हम कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे, what we have to do is y की जगह हम हमेशा b रखेंगे and x की जगह हम a रखेंगे. So b is equals to 28 when a is equals to 4. b की वैल्यू है 28 when a की वैल्यू है 4. Express b in terms of a. Now expressing b in terms of a directly नहीं बता रहा, इनडायरेक्टली वो यही आपसे कह रहा है कि इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड बी. वो कौन सी इक्वेशन है जो बी और ए को कनेक्ट करती है? डेफिनेटली बी इज इक्वल टू के ए. सो बी इन टर्म्स ऑफ ए आ गया. बट बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए. अगेन बी तो वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, बट के तो वेरिएबल नहीं है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. सो दैट हमें जब एक दफा के की वैल्यू मिल जाएगी तो हम कह सकेंगे, लेट्स से के की वैल्यू आती है 2, तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू 2a. अगर 3 आती है तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू 3a. 5 आती है तो हम कहेंगे b इज इक्वल टू 5a. b इन टर्म्स ऑफ a, राइट? नाउ b is equals to a ka. Now we have to use these values. b is equals to 28 and a is equals to 4. इससे हम अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की. 28 is equals to k टाइम a is 4. Now 4 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, is equals to k. 1 times is 4, 4 5 is 26, 7 times is 28. So k, the constant of proportionality, is 7. Now as we now know the value of k, we can rewrite this equation, that is
Therefore, B is equals to Ka can now be written as B is equals to 7A. Because K is a constant, तो उसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 7. अब A की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, B की वैल्यूज आती जाएंगी, राइट? सो B is equals to 7A. B in terms of A, B A की फॉर्म में B is equals to 7A. Now, remember this thing. B in terms of A कहा जाए या in equation connecting A and B कहा जाए, दोनों ही केसेस में आपने बेसिकली इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, राइट? और इक्वेशन तभी मिलेगी जब K की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 2. द वैल्यू ऑफ B व्हेन A इज इक्वल्स टू 5. B की वैल्यू क्या होगी व्हेन A इज इक्वल्स टू 5? सो वी डोंट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एनीमोर, बिकॉज हमें अब हमारा एक कनेक्टिंग इक्वेशन मिल चुकी है. एक इक्वेशन जो कि A और B को कनेक्ट करती है, वो फाइंड आउट हमने कर ली है. जब एक फाइंड आउट हो गई है तो अब हम इसी को यूज करेंगे और इजीली आंसर्स आएंगे. B इज इक्वल्स टू 7A. Now B is equals to A is 5. In this case, A is 5. So B is equals to 7 5 times is 35. So when A is equals to 5, B is 35. And now part 3. Again, we have the equation B is equals to 7A. The value of A when B is equals to 42. अब B की जगह हमने लिख दिया 42, 7A. Now A को सब्जेक्ट बनाते हैं, 7 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे. 42 upon 7 is equals to A. 7 1 or 7? 7 6 times is 42. The value of A is 6 when B is 42. Once we have the equation, उसके बाद हमें इस फॉर्मूला की नीड नहीं होती. I hope this question is now clear to you. Now, let's practice some advanced questions related to direct proportions. Now, suppose if y square is directly proportional to x, if y square is directly proportional to y square is proportional to x, and how are they proportional? Is equals to kx. Because they are directly proportional, that is why equals to k ने substitute कर लिया इस साइन को. Now, अगेन यहां पर हमने डिसाइड करना है इन प्लेस ऑफ y अब क्या है y स्क्वायर, एंड इन प्लेस ऑफ x वी हैव x. सो जब भी y आएगा हम उस जगह पर y स्क्वायर लिखेंगे, और जब भी x आएगा हम वहां पर x ही लिखेंगे, राइट? सो y is equals to 4 when x is equals to 8. y की वैल्यू 4 है जब x की वैल्यू 8 है. Find an equation connecting y and x. Again, we have to find out the equation, which means equation में k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि y और x तो वेरिएबल्स हैं, वो तो चेंज ही होते रहेंगे, बट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो भी हमें एक प्रॉपर इक्वेशन मिलेगी. इक्वेशन क्या हो सकती है? y इज स्क्वायर, बिकॉज y की जगह हमने अब क्या लिखना है? y स्क्वायर, और x की जगह तो x ही लिखना है. नाउ y की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k. x की वैल्यू क्या है? 8, राइट? नाउ दिस बिकम 4 स्क्वायर इज 16 is equals to k multiplied with 8. 4 4 is 16, right? 8 को अब दूसरी साइड पे लेकर आते हैं. 16 divided by 8 is equals to k. 8 1 times is and 8 2 times is 16. 2 is equals to k. The value of k is 2. Now we can go back to our equation and substitute the value of k, and we can say therefore y square is equals to k की जगह k की वैल्यू 2 पर x. This is the equation connecting y square and x. I hope this is clear. Now, once we have our equation, we don't need this formula anymore. We will use this equation and find out the missing values. Let's say, find the value of y when x is equals to 18. We have the equation
y square is equals to 2x. This is part 2. So x is equals to 18. We have to find out the value of y. To x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, that is 18. So y square is equals to 36. Now we have to find out the value of y, not y square. So we have to remove a square. Square कैसे remove होगा? By applying square root on both sides. Square cancels out square root. Y is equals to 36 है. So we have two answers, plus minus 6, because under root of 36, under root 36 is 6. 6 times is 36. So 36 का आंसर आ गया, under root 36 का आंसर आ गया plus minus 6. Now remember, we know जब भी square root apply होता है, square root के बाद we get two answers, a positive value and a negative value. I hope ये point आपको clear है, because ये हमने पहले study कर लिया है. Now let's see part 3. Find the value of x when y is equals to 5. We have the equation y square is equals to 2x. Value of x की value find out करनी है, y is 5. So y की जगह y की value put कर दी, 5 square is equals to 2x. Now 5 square is 25 is equals to 2x. 25 divided by 2 is equals to x, and that is 12.5 is equals to x. So the value of x is 12.5 when y is equals to 5. I hope this question is now clear to you. Now let's look at the last question related to direct proportions. If z square is directly proportional to y cube, z square is proportional to y cube. And how is it proportional? Directly proportional. So z square is equals to k, this sign replaced by equals k and y cube, right? So अब हम अपने फॉर्मूला को देखते हैं, जनरल फॉर्मूला को, और हम इस फॉर्मूला को देखते हैं. जनरल फॉर्मूला से y इज इक्वल्स टू के एक्स. इस फॉर्मूला में y को रिप्लेस कर दिया है z स्क्वायर ने, एंड x को रिप्लेस कर दिया है y क्यूब ने. सो अब इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को यूज करें या इस फॉर्मूला को यूज करें? वेरेवर देयर इज y, वहां पर आ जाएगा z स्क्वायर, एंड वेरेवर देयर इज x, वहां आ जाएगा y क्यूब, राइट? नाउ z is equals to 8 when y is equals to 4. z की वैल्यू 8 है when y की वैल्यू 4 है. Find the value of z when y is equals to 9. z की वैल्यू क्या होगी when y is equals to 9? Again, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा? नहीं. इक्वेशन कनेक्टिंग z and y कहा? नहीं. So we don't have to use this equation because हमें इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करनी. We'll directly use this formula and we'll get the values. y1 upon x1. y की जगह यहां क्या आएगा? z upon z स्क्वायर अपॉन y के x की जगह आएगा y क्यूब. सो y को रिप्लेस कर दिया z स्क्वायर ने, एंड x को रिप्लेस कर दिया y क्यूब ने. कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू y2 अपॉन x2, z स्क्वायर अपॉन y क्यूब. अगेन y को रिप्लेस कर दिया z स्क्वायर ने, एंड x को रिप्लेस कर दिया y क्यूब ने. एंड ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज सेकंड वैल्यू, राइट? नाउ we'll substitute the given values to us. z1 की वैल्यू है 8 स्क्वायर, z1 की जगह आ गया 8 स्क्वायर, एंड y1 की जगह आ गया 4 क्यूब. नाउ z2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. y2 की वैल्यू है हमारी 9 एंड क्यूब, राइट? नाउ फर्स्ट हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं. 8 स्क्वायर इज 64 upon 4 cube is 4 into 4 into 4, that is 64 again. Now z2 square जिसको फाइंड आउट करना है अपॉन 9 cube, 9 into 9 into 9, that is 729. So
Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 729 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। (64) cancels out 64. We are left with 729 is equals to Z2 square. Now हमें Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, Z2 स्क्वायर की नहीं, सो वी हैव टू रिमूव स्क्वायर, और स्क्वायर रिमूव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो 729 is equals to Z2 square. Square cancels out square root. Here we are left with Z2, Z की second value, and under root 729 is 27. And as we know, square root के हमेशा आने के बाद we get two values, a positive value and a negative value. So this is plus minus 27. A positive value plus 27 and a negative value minus 27. I hope this question is now clear to you. Now let's practice some questions related to inverse proportion. Okay, so the very first question is, if y is inversely proportional to x, y is proportional to x, but how is it proportional? Y is equals to k upon x, because it is inversely proportional, inverse proportion. Okay, so y is equals to 5 when x is equals to 7. Find the value of x when y is equals to 70. Now in this question हमसे कहीं नहीं पूछा गया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k की वैल्यू फाइंड आउट करें या इक्वेशन कनेक्टिंग y and x फाइंड आउट करें, राइट? व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू फाइंड अ मिसिंग वैल्यू ऑफ x. वी हैव y1 x1 and we have y2, but x2 is missing. So what we are going to do is we are going to use this formula, y1 x1 is equals to y2 x2. y1 x1 is equals to y2 x2, and substitute the values. Y1 is 5 into x is 7 and y2 is 70 into x2, which is unknown, so we have to find out this value. Now 7 5 times is 35 is equals to 70 into x2. Now we have to find out the value of x2, so we'll take 70 on the other side. 35 upon 70 is equals to x2. 35 one time and 35 two times. So x2 is equals to 1 upon 2 or 1 by 2 or 0.5, half, right? I hope this question is now clear to you. Now let's look at another question. If x is inversely proportional to y, x is inversely proportional to y is equals to k upon x. Again, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि y x नहीं हो सकता और x y नहीं हो सकता, राइट? ये एक जनरल फॉर्मूला है, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट? y की जगह कोई और वेरिएबल के लिए लेटर यूज किया जा सकता है, x की जगह कोई भी वेरिएबल के लिए लेटर यूज किया जा सकता है. इट कैन बी a b p q, any letter can be used. Okay, this is just a general formula. Now for this question, if x is inversely proportional to y, which means x is proportional to y, and how is it proportional? X is equals to k upon y, right? So y की जगह अब x आ गया and x की जगह y आ गया, right? So x is equals to 40 when y is equals to 10. x की वैल्यू 40 है when y की वैल्यू 10 है. Find an equation connecting x and y. Equation जो हमें फाइंड आउट करनी है, which means कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज x एंड y तो वेरिएबल्स हैं बट k इज अ कांस्टेंट. उसके बगैर इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी. सो x इज इक्वल्स टू k अपॉन y, बिकॉज हमने अभी डिसाइड किया x इन प्लेस ऑफ y एंड y इन प्लेस ऑफ x. नाउ x की वैल्यू क्या है? 40 इज इक्वल्स टू k अपॉन
y की वैल्यू क्या है 10. जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 10 goes on the other side. 40 multiplied with 10 is equals to k, and that is 400 is equals to k. The value of k is 400. Now, going back to the equation, x is equals to k upon y. Therefore, x is equals to, now in place of k हम लिख देंगे k की वैल्यू 400 upon y. Now we have the equation connecting x and y. I hope ये point आपको clear है. Now, the value of x when y is equals to 50. x की value क्या होगी when y is 50? Now we have the equation, so हमें इस formula की requirement अब नहीं है. We can simply use our equation. X is equals to 400 upon y. X is equals to 400 upon y की जगह 50. So we substituted the value of y, that is 50, and x is equals to 8, right? Inverse proportion है ना. So जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी x की वैल्यू डिक्रीज होगी. हुआ क्या, y की वैल्यू थी 10, x की वैल्यू हो गई 40. अब y की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो x की वैल्यू को डिक्रीज करना है. y की वैल्यू 10 से 50 हो गई, x की वैल्यू 40 से 8 हो गई. राइट नाउ, the value of y when x is equals to 200, we have the equation x is equals to 400 upon y. x की वैल्यू क्या है 200 is equals to 400 upon y. We'll take the y on the other side and 200 on this side. ये यहां जाएगा और 200 इधर आएगा. So y is equals to 2. राइट. अगेन देखें, x की वैल्यू इंक्रीज की है, x की वैल्यू 40 से 200 हो गई है. y की वैल्यू को 10 से नीचे जाना है बिकॉज दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. दे मूव इन दी ऑपोजिट वे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. x की वैल्यू इंक्रीज हो गई, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, 10 से 2 हो गई. आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If Q is inversely proportional to P, Q is proportional to P, and how is it proportional? Inversely. So Q is equals to K upon P. If Q is inversely proportional to P, अब हमारा जनरल फॉर्मूला y is equals to kx को y को रिप्लेस कर दिया है q ने, एंड x की जगह रिप्लेसमेंट आ गई है p, राइट. सो हम जो भी फॉर्मूला यूज करें, इधर दिस वन और दिस वन, y की जगह हम q लिखेंगे एंड x की जगह हम p मेंशन करेंगे. सो q is equals to 3.5 when p is equals to 2. q की वैल्यू है 3.5 when p is 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ q when p is 1.4. अगेन हमें कहीं पर भी इक्वेशन कनेक्टिंग फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है, ना ही हमें ये कहा गया है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट किया जाए, k की वैल्यू फाइंड आउट की जाए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to use this formula and simply find out the value of missing variable. So y1 x1 is equals to y2 x2. y की जगह q है, so we will say q1 p1, x की जगह p है, right, is equals to q2 p2. Now q1 is 3.5, that is this value, and p1 is 2, and q2 we have to find out into p2 is 1.4. So we have to find out the value of q2. We'll move 1.54 on the other side. This makes 3.5 multiplied with 2 upon 1.4, that is equals to q2. So 3.5 into 2 is 7 upon 1.4, that is equals to q2. Now 7 divided by 1.4 is 5. The value of q2 is 5. See, this is
inverse proportion. So 3.5 से सॉरी p की वैल्यू 2 से 1.4 हुई है, विच मीन्स p की वैल्यू रिड्यूस हुई है. इनवर्स प्रोपोर्शन है का मतलब ये है कि अब q की वैल्यू को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि अगर ये 2 से 1.4 रिड्यूस हुई है, सो 3.5 से इसको इंक्रीज करना है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. सो 3.5 से 5 हो गए, राइट? दैट इज व्हाई इट इज इनवर्स proportion. I hope this question is clear to you. Now, let's look at another question. If B is inversely proportional to A, now B is inversely proportional to A. B is proportional to A, and how is it proportional? B is equals to K upon A because it is inversely proportional. Now, in our general equation, Y is now replaced by B and X is replaced by A. So, whenever in this question we are going to use this formula or this formula, whichever formula we are going to use, remember this thing. In place of Y, we are going to write B, and in place of X, we are going to write A, right? So, B is equals to 0.5 when A is equals to 2. B is 0.5 when A is 2. Express B in terms of A. B को A के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, विच मीन्स सबसे पहले तो हमें ये पता है कि A एंड B बोथ आर वेरिएबल्स, राइट? इक्वेशन है B इज इक्वल्स टू K अपॉन A. द इक्वेशन इज B is equals to K upon A, right? B in terms of A, but in terms of A नहीं, इस वक्त in terms of K and A है. So we have to find out the value of a constant K. उसके कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें एक्चुअली में b इन टर्म्स ऑफ a मिल जाएगा. सो वी कैन आल्सो से एन इक्वेशन कनेक्टिंग b एंड a using the values given to us 0.5 and 2. Let's substitute these values. a की वैल्यू है 2. Now 2 goes on this side. 0.5 multiplied with 2 is equals to k, and 0.5 multiplied by 2 is 1. So the value of k is 1. Therefore, B in terms of A or equation connecting B and A, हमें यहां से दोबारा रिटर्न जाना है, and B is equals to 1 upon A. This is our equation B in terms of A or equation connecting B and A. दोनों ही बातें एक ही हैं, right? So now we have the equation. In the next part, find the value of B when A is equals to 5. We do not need this formula because we already have an equation connecting B and A. So what we are going to do is part 2, B is equals to 1 upon A. B is equals to 1 upon 5. A की जगह मैंने A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. B is equals to 0.2. 1 upon 5 is 0.2 in decimal. So what we can see here is, देखें, B की वैल्यू A की वैल्यू 2 से 5 हो गई है, इंक्रीज कर गई है. इनवर्स प्रोपोर्शन है, दैट मींस B की वैल्यू को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, रिड्यूस होगी, 0.5 से 0.2 हो गई, राइट? नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट, 1, 2 and 3. Calculate the value of A when B is equals to 0.1. Again, we have the equation, so we are going to use that equation. B की जगह B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, right? Now, A goes on this side and 0.1 goes on this side. We are left with A is equals to 1 upon 0.1. We have 1 upon 0.1, which is A is equals to 10. Again, B की वैल्यू 0.5 थी तो A 2 था. अब B की वैल्यू 0.1 हो गई है, रिड्यूस हो गई है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो A की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए, 2 से 10 हो गई. I hope this question is now clear to you. Okay, so now let's practice an advanced level question related to inverse proportion. If y is inversely proportional to x cube, y is proportional to x cube, and how is it proportional?
y is equals to k upon x cube because it is inversely proportional. Now, from our general formula y is equals to kx, we can deduce that in place of y we have y, but in place of x we now have x cube. So whether we use this formula or this formula, y will not be replaced because y is y, but the value of x, the variable x, will be replaced by x cube, right? So y is 50 when x is equals to 2. y की वैल्यू 50 है when x is equals to 2. Find the value of y when x is equals to 4. This time हमसे पहले इक्वेशन कनेक्टिंग नहीं कहा गया, हमसे पहले कहा गया है कि आपको हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज दे दी हैं y is equals to 50 and x is equals to 2, और दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज की एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू मिसिंग है. So we have to find out that value. We are going to use this formula. y1 x1, y की जगह तो y ही आएगा, y1 x1, but x की जगह x क्यूब आएगा, right? Is equals to y2 x cube की second value, right? Now let's substitute the values. y1 is 50 multiplied by 2 cube is equals to y2 हमें find out करना है multiplied with 4 cube, right? Now 50 multiplied with 8, 2 cube is 8, and y2 into 4 cube is 4, 4 is 16, 16 into 4 is 64. So to find out the value of y2 हमें 64 को दूसरी साइड पे मूव करना है upon 64 is equals to y2. Let's see what do we get. 50 multiplied with 8 divided by 64, that is 6.25. The value of y2 is 6.25. Let's see. x की वैल्यू 2 से 4 हो गई. बिकॉज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, y की वैल्यू को रिड्यूस होना चाहिए था क्योंकि ये इंक्रीज हुई है, 2 से 4 हुई है, सो इसको रिड्यूस होना है 50 से 6.25. ओके, दिस इज वाई y2 is 6.25. I hope part 1 is clear to you. Now part 2 says find an equation connecting y and x. हमेशा क्या होता था, पहले हमसे इक्वेशन फाइंड आउट करवा लेता था, तो उसके बाद हम इन पार्ट्स को डायरेक्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते थे. बट दिस टाइम उसने पहले हमसे एक एफर्ट करवाई है, बट इन सेकंड पार्ट इट इज आस्किंग अस कि भाई मुझे इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x बताएं. सो y इज इक्वल्स टू k अपॉन x क्यूब, ये हमारी इक्वेशन है, बट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो वी हैव द गिवन डाटा सेट, दैट इज y इज इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू k अपॉन x की वैल्यू है 2 क्यूब, राइट? सो 50 is equals to k upon 2 cube is 8. 88 goes on that side. 50 multiplied with 8 is equals to k, and 58 and 85 is 400 k. Now the value of k is 400. इसको हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore y is equals to 400 upon x cube. This is our equation connecting y and x. I hope this equation is clear. Now part 3, find the value of x when y is equals to 3.2. Value of x when y is equals to 3.2. Now we can use this formula, but now we already have an equation, so we don't have to use that formula because वो बहुत lengthy procedure है. Simply अपने equation को use करें, y is equals to 400 upon x cube, and missing value को find out कर लें, y is 3.2. So हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो x क्यूब को वहां ले जाएंगे और 3.2 को इक्वल्स टू के दिस इस हैंड पे मूव करते हैं. x क्यूब इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 3.2.
What do we get? 400 divided by 3.2, that is 125. फाइंड आउट करना है x की वैल्यू x क्यूब की नहीं, सो वी हैव टू रिमूव क्यूब. और क्यूब कैसे रिमूव होगा? बाय अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. Cube cancels out cube root, we are left with x, and cube root of 125 is actually 5, but still that is 5. For square root हमारे पास दो आंसर्स आते हैं प्लस माइनस में, राइट? अ पॉजिटिव वैल्यू एंड अ नेगेटिव वैल्यू. बट क्यूब के लिए इट इज नॉट ट्रू. क्यूब में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, राइट? सो x इज इक्वल्स टू 5. आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू. So now let's apply these formulas in real life scenarios. In real life scenarios, ये formulas कहाँ apply होते हैं, किस तरह apply होते हैं? The applications of direct and inverse proportion. Let's see, this is the first application. 10 similar books cost 4,000 rupees. 10 similar books cost 4,000 rupees. Find the cost of 15 similar books. Now, अगर आपको 10 similar books की cost बता दी गई है और आपसे कहा जाता है कि 15 बुक्स अगर हम परचेज करते हैं, 10 नहीं 15 कर लेते हैं, तो अब उसकी कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली सिमिलर बुक है तो कॉस्ट भी सेम ही होगी, राइट? सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर इज, फर्स्ट हमें हमारे टू मैथमेटिकल वेरिएबल्स को सर्च करना है, वो इस क्वेश्चन में कौन से हैं. सो द टू वेरिएबल्स जो चेंज हो सकते हैं, नंबर वन इज सिमिलर बुक्स. नंबर ऑफ बुक्स इज द फर्स्ट वेरिएबल. And as the number of books change, obviously the cost of those books will also change. Cost will also change. So now let's identify in these two variables which variable is an independent variable and which variable is a dependent variable. So number of books, obviously बात है, number of books हमारी अपनी choice है. We can buy 10 books, we can buy 20 books, we can buy 30 books, but cost तो उसके relatively ही आएगी ना. So this is x, an independent value, and this is y, a dependent variable. So let's say the first scenario is 10 similar books. 10 books will cost 4,000 rupees. Cost of 15 similar books, we have to find out 15 similar books की cost क्या है? So we say this is x1, this is x2, this is y1, and this is y2. Right? Now, as this is a direct proportion, because cost, number of books बढ़ेंगी तो cost भी बढ़ेगी, right? Proportionally cost भी increase होगी. If number of books increase, proportionally the cost will also increase. दोनों ही quantities increase हो रही हैं, which means it is a direct proportion. So we will use this formula. We'll say y1 upon x1 is equals to y2 upon x2. y1 is 4,000 upon x1 is 10 is equals to y2 upon x2. y2, we have to find out the value of y2 upon 15. Now 15 goes on this side. 4,000 multiplied with 15 upon 10 is equals to y2, 6,000. So the price of 15 such books is 6,000 rupees. This is y2. Okay. Now in the next part it says how many similar books will cost 3,200 rupees. If the cost of books is 3,200 rupees, अब उसने ऐसे अज्यूम कर लें कि उसने शॉपकीपर को कुछ बुक्स परचेज की हैं और उसने 3,200 रुपीज उसको पे किए हैं. अब वो ये पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि उस स्टूडेंट ने जिसने बुक्स परचेज की हैं उसने कितनी बुक्स परचेज की थी. सो दिस इज x3. द थर्ड वैल्यू 3,200 x3. We have to find out how many books, right? So once again we have this formula, y1 upon x1 is equals to y2 upon x2.
But in this case, this is the third value, so I'm going to say y1 upon x1 is equals to y3 upon x3. This 1 and this 3 represent कि हम कौन सी वाला वैल्यू सेट पिक कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू सेट, दिस इज द थर्ड वैल्यू सेट. अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग. आप चाहें तो आप वैल्यू सेट 2 और वैल्यू सेट 3 को इक्वल्स करके रख लें. y2 upon x2 is equal to y3 upon x3. आंसर में चेंज नहीं आएगा, राइट? सो ओके, so y1 upon x1 is 4000 upon 10 is equals to 3200 upon x3. Okay, this 10 moves on this side, x3 को यहां ले जाते हैं. This is x3 is equals to 32,000 upon 4,000. So x3 is equal to 8. Eight books will cost 3,200, right? I hope this application is now clear to you. Okay, now let's look at another application. An investor buys 100 shares of company A for a total value of $5,000. Find the value of 150 shares. Now, company A के shares हैं जो कि investor buy कर रहा है. So, an investor buys 100 shares और उसको पे करने पड़े हैं $5,000. So, 100 shares की value है $5,000. Now, let's see. First things first. What are the two mathematical variables here? Number one, what I can see here is number of shares and the total value. Because number of shares अगर reduce कर देंगे तो value भी reduce हो जाएगी, अगर number of shares को increase कर देंगे तो value भी increase हो जाएगी. So these are the two mathematical variables, right? Let's write it down. Number of shares and total value. Let's see. इन दोनों में कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है. देखें, नंबर ऑफ शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग ये इन्वेस्टर की अपनी चॉइस होती है, राइट? सो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट एक्स. बट अगर वो एक शेयर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बाय कर रहा है तो उसकी अगर वो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर देगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना. सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. टोटल वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ शेयर्स पे, राइट? बट अब ये सिनेरियो कौन सा है, इनवर्स या डायरेक्ट? ऑब्वियसली डायरेक्ट. इंक्रीज इन वन इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग द अदर. सो दिस इज direct proportion. So we have these two formulas over here. Now let's say an investor buys 100 shares. 100 shares की cost total value है $5,000. The value of 150 such shares. 150 shares की value क्या होगी? y1 upon x1 is equals to y2 upon x2. 5,000 upon 100 is equals to y2 upon 150. So 150 goes on this side. 5,000 multiplied with 150 upon 100 equals to y2. $7,500 equals to y2. So if the investor decides to buy 150 shares instead of 100 shares, he has to pay the total value of $7,500. I hope this is clear. Now, in part 2, it says the number of shares that can be bought for a total value of $8,000. So $8,000 है investor के पास. How many can this investor buy?
दिस इज x3. सो अगेन हम कोई भी दो डाटा सेट्स यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज दीज टू डाटा सेट्स और वी कैन यूज दीज टू डाटा सेट्स. इट इज अप टू अस. आंसर में चेंज नहीं आएगा. Let me use these two data sets, the second and the third one. The y2 is actually now 7500. आप भी इस पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई आंसर में कोई चेंज नहीं होता. सो y2 upon x2 is equals to y3 upon x3. 7500 upon 150 is equals to 8000 upon x3. Okay, so this x3 goes over there and this 150 goes over there. In the next step, 7500 goes on the other side. $160 shares. So, for a total value of $8,000, an investor can buy 160 shares of company A. I hope this question is now clear to you. Okay, now let's look at another application. Given that 8 men can lay a road in 12 days, find the time taken for 6 men to lay the same road. Okay, first things first, let's find out the two mathematical variables, number of men and number of days. The second thing, which is an independent quantity and which one is a dependent quantity? Obviously, number of men is an independent quantity. We can increase the number of workers, we can reduce the number of workers, but number of days is dependent on number of workers that are laying the road. So, the first data set that we have is 8 men can lay the road in 12 days. 6 men will lay a road in how many days, right? So, अब यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. सी, अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्क में नंबर ऑफ लेबर को रिड्यूस कर दिया जाए, वर्कर्स को रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली उस काम को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा. नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हुए, टाइम इंक्रीज हुआ, ऑपोजिट वेज में मूव किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो वी हैव दीज फॉर्मूलाज, राइट? नाउ y1 x1 is equals to y2 x2. 12 into 8 y1 x1 is equals to y2 into 6. Now, moving 6 on the other side, 1 times is 6, 6 2 times is 12, 8 into 2 is 16. So, 16 days is equals to y2. So, if the number of workers are reduced, time taken, number of days to complete that project, that road is increased. 12 से 16 हो गया. I hope this example is clear to you. Okay, now let's look at another application of direct and inverse proportion. Let's see direct है या inverse है, ये पता लगेगा. At a school camping trip, एक स्कूल के camping trip पे, there is sufficient food for 72 students to last 5 days. एक camping trip जो अरेंज किया है स्कूल ने, उसमें 72 स्टूडेंट्स के लिए 5 days का फूड अरेंज किया है, राइट? सफिशिएंट फूड है फॉर 5 days. If 12 students decide to quit, ऑन ऑफ अ सडन 12 स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि भाई हम क्विट करते हैं एट द लास्ट मोमेंट. ओके, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया उन्होंने कि हमने नहीं कैंपिंग ट्रिप पे जाना. नाउ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 72 में से 12 माइनस हो गए, विच मीन्स अब हमारे पास सिर्फ 60 स्टूडेंट्स हैं. सो
हाउ मच मोर विल द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? ऑब्वियसली बात है, 72 स्टूडेंट्स का फूड 5 डेज तक चल रहा था ना, 5 डेज लास्ट करता था। अब 60 स्टूडेंट्स हैं लेकिन फूड तो सेम ही है। अब वो हमसे पूछ रहा है कितने दिन एक्स्ट्रा वो फूड हमारे पास सेव होगा, कितने दिन हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। 5 डेज की जगह हो सकता है 6 डेज हो जाए, 7 डेज हो जाए, राइट? द क्वेश्चन इज हाउ मच हाउ मच मोर विल द फूड लास्ट? कितना एक्स्ट्रा फूड लास्ट करेगा, कितने डेज एक्स्ट्रा फूड लास्ट करेगा, राइट? यहां जो है ना, एक चीज समझ लें, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि अब कितने दिन फूड चलेगा, उसने हमसे पूछा कितने एक्स्ट्रा डेज ऐड हो गए हैं आपके 5 डेज के। उसके जो हमने जो रखा था 5 डेज का था, राइट? हो सकता है 7 डेज का अब आ गया हमारे पास, राइट, फूड। सो 7 डेज के हिसाब से देखा जाए तो अब हमारे पास 2 मोर डेज का फूड आ गया है। 5 डेज से 7 डेज गए तो 2 मोर डेज का फूड आ गया है, राइट? बट वो पता कैसे चलेगा कि कितने एक्स्ट्रा डेज ऐड हुए हैं? तभी पता चलेगा जब हमें ये पता लग जाए कि वो जो 72 स्टूडेंट्स के लिए 5 डेज लास्ट कर रहा था, अब 60 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन लास्ट करेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिड्यूस हो गए हैं तो फूड की क्वांटिटी जो सेम है वो जितने दिन लास्ट करेगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द टू वेरिएबल्स हियर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which is an independent, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे 12 स्टूडेंट्स ने क्विट कर दिया। नाउ नंबर ऑफ डेज इज डिपेंडेंट। सो 72 स्टूडेंट्स हैं तो 5 डेज फूड लास्ट करेगा। 60 स्टूडेंट्स हैं बिकॉज 12 स्टूडेंट डिसाइड टू क्विट। 12 स्टूडेंट्स नहीं कह रहा, 12 स्टूडेंट्स ने क्विट किया है, विच मीन 60 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। अब ये कितने दिन लास्ट करेगा? सो y1 x1 is equals to y2 x2. y1 5 into 72 is equals to y2 into 60. 5 into 72 upon 60 is equals to y2, right? 60 को मूव किया दूसरी साइड पे। नाउ 5 into 72 divided by 60 is 6. So for 72 students the food lasted 5 days. For 60 students the food will last for 6 days. Now the question says how much more will the food last? Obviously, therefore 5 से 6 गया है तो 1 more day. This is the final answer. 1 more day the food will last for 60 remaining students. I hope this question, this application is now clear to you. Okay students, so this was all about direct and inverse proportion. I've tried my best to cover all the details of this topic in this lecture, in this video. Now remember, I have not covered the graphs of direct and inverse proportion. वो एक बहुत डिटेल टॉपिक था और वो बहुत पहले ही हम कवर कर चुके हैं ग्राफ्स वाले टॉपिक के अंदर। ऑल दैट यू हैव टू डू इज y1 x1 y2 x2 इनकी वैल्यूज को एक टेबल में पुट करना है और उस टेबल को आपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट्स व्हाई मैंने वो इस वीडियो में कवर नहीं किया है। नाउ as far as this topic is concerned, I have tried my best to cover all the concepts so that आप अपने books and आप अपने past papers को easily solve कर सकें। Now, practice आपने खुद करनी है। So open your books or your past papers और उसमें से जो आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मिलते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए एंड विल मीट विथ अनदर टॉपिक in the next video. Till then, take care.